first thought that came was Seat belt. Seat belt. seat, beat, anything which is rhyming, anything which is there. What happened is we usually fall prey to recency biases. Immediate अभी Yes. ऐसा यहाँ हुआ तो वहां भी ऐसा हुआ होगा. ये हो रहा है फिर से ऐसा हुआ होगा. Okay, so that's where our biases become filter. And Seat boot. Yeah, seat boat could be the one. ऐसा तो कहा ही नहीं कि वो नहीं हो सकते. Hmm. But the ultimate idea is recency biases are perspective of the niche situation is influenced by what has recently transpired. And how do we Yes, it overcome is- this, sir? Yes, It sir. is basically on preconceived ideas. Yes, sir. Okay. So how do we get rid of this, sir? ये bias को दूर कैसे करेंगे? क्या we always ask ourselves where you could get these insights into understanding the situation. Okay. और या फिर क्या अगर हम immediate recency में जा रहे हैं तो can I challenge that assumption again? So pausing and stepping back is big picture thinking. Okay, and let's get into the last bias and then we'll go for a tea break. The familiarity bias. सुबह बड़ी अच्छी चर्चा हो रही थी सर, मैं ध्यान से सुन रहा था, जहां हम लोगों को इन्फ्लुएंस या उनको फैमिलियराइज भी कराते हैं उनकी ही लैंग्वेज के साथ. कोई पंजाबी है तो हम सत श्री अकाल करके उनको ग्रीट कर देते हैं, उस तरीके से बात कर लेते हैं. मैं जयपुर से हूँ, तो जयपुर से मेरा कोई कैंडिडेट मेरी टीम में हायर होने के लिए आया, आई विल हैव अ सर्टेन सेट ऑफ माइंडसेट, इजंट इट? ओके, मैं ट्रेनिंग बैकग्राउंड में अपनी टीम में लोग हायर करता हूं, तो एनीबडी हु कम्स फ्रॉम अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, आई विल हैव दैट फैमिलियरिटी. अच्छा उसके पास ये क्वालिटी होगी, बट डज इट टर्न आउट टू बी द ट्रुथ? मेरे लिए तो कभी काम नहीं किया सर. दैट इज एक्चुअली अ बायस. सो फैमिलियरिटी बायस इज वी टेंड टू स्टिक विद व्हाट इज फैमिलियर. Okay, we create associations between unrelated phenomena. वाह. और जब आपने बात कही थी अनसर्टेनिटी या फेलियर की हम लोग फियर करते हैं, वो फैमिलियरिटी बायस की वजह से. सो टू गेट रिड ऑफ दिस पर्टिकुलर बायस, we have to know more information and we should not worry about experimenting, sir. Okay, so if there's an opportunity, I would Yes, sir. say from familiarity, rather I would say perspective. okay, Because as we grow in service with our experiences and what we deal on a daily basis, we develop perception, yes sir, and accordingly, then we decide on the course of action what we have to take as per the situation. What we have seen, or like here also we are sharing experiences. yes sir, So naturally somebody else would have faced that situation, whatever, how he has dealt with that or how he has coped up with that. Naturally we come to know, and we also tend to think of such reactions as those would be prudent to that situation. absolutely, Because sir. generally training would certainly be different from field. Because training would be ideal situations and ideal solutions. बिल्कुल sir. Because yes, there has to be certain set of rules which are to be framed and which are to be adhered. But then you have to see what the ground situation dictate and how you can make optimum use of these resources. So that is possible only as per your experience, what you have seen in the past and how to deal. So Absolutely. familiarity bias will be there because of our experiences. And as I said, since we are responsible for our actions, yes, feedback will be, information will be taken, opinions will be taken. But ultimately, when I am responsible for my action, the decision would have to be mine. Exactly, गिरी सर, बिल्कुल बढ़िया से आपने सम अप किया. एक्सपीरियंस तो है ही सर. बिग पिक्चर थिंकिंग इज नॉट अ बेबी गेम. कोई न्यू भी आकर के नहीं बोल सकता कि ये नया सोच दूंगा मैं. Girish sir, just a point, sir. Just I want to elaborate something, sir. As we have done few courses, and I will not quote name, but however we found when we are doing our basics and we are doing subsequent courses, so we have found similar same instructors, and just last month he got retired.
And what we find that he having similar biasness as he was with our basic training batches and subsequent batches. So here we having certainly, sir, disagree on these issues that should be taken as it happening in present condition, not in the past conditions. We should not bias while we are go for that. Great point, Bhagat. And sir. doing Yes, and sure. doing that, sir, we are doing for you also. Acknowledge me that that was not a good decision because he was biased. That was the not good decision by him. Yes, sure. Great. Thank you, Bhagat sir, for bringing in that insight and that live example from the training part. So I hope we are. मेंशन है सर आपने पढ़ा नहीं है ठीक से मेंशन है Okay, so these are the thinking traps, the cognitive traps that we all discussed. I am interested to know which one are you willing to work upon? कौन सा सबसे ज्यादा हम face करते हैं या कर रहे I हैं? feel that tired and emotional of the majority of us would agree that this is the most relevant to us. Okay, गिरी सर, मैं ये आपके लिए अप्लाई जरूर करूंगा कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपके लिए ये पॉइंट हुआ. Others can feel free to mention that as well. As we walk out, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वरना आपकी हैंडबुक में भी है. Please go back and work upon this for your own workspace. Okay, and of course your insights are very valuable to me, sir. Meanwhile, आप tea break के लिए let's proceed for a tea break for about 10 minutes. What do you say? Yes, Ravi, I think we can take a break and we can have a 10-minute break for us. Before we quickly break up for a break, I wanted to talk to Neeraj sir. I just wanted to add something. I think sir want to know a little bit on simplicity bias. So Ravi, if I may, I'll give sir an Yeah, please. example beyond that, the math example. Suppose sir ऐसे सोचिए कि हम जब सोचिए आप गाड़ी से एक दिन जा रहे हैं और आपने एक एक्सीडेंट देखा, एक कार और एक बाइक का, दोनों का एक्सीडेंट हुआ है. हम पासिंग रिमार्क्स में ऐसे बोल देते हैं अरे ये ड्राइवर ही गलत चला रहा होगा. Yeah, you always think of fact maybe it was drunk, but because our bias is that we go for the simplest reasons, the reasons that we know कि ये आप there are potholes रास्ते पे. But perhaps it could have been that the accident was caused by a third party and they went off unharmed. Maybe there was a car that was driving rash, and as a result they both couldn't maneuver and then they crashed and then the accident happened. We always go for the simplest reasons. We don't, that is the why. And that is what Ravi sir was trying to explain, that जब हम बड़े picture सोचते तो हम इतने simple अगर सोच रहे थे, when we go for the simplest example, then that is a big obstacle for us. Because when you're thinking big picture, it is time we sit back and reflect. And if when you suppose you're a leader at that level and you're supposed to, kind of address road safety, or you're someone who is, at that level where you're thinking, you can't think in simple ways. Ki people are rash, they drive that way. You know that, and you start thinking of various reasons. You start to connect and think in a much larger picture. So that is what is another example, Neeraj sir. Yeah, Swamidev, I think Neeraj sir is unmuted for things, but yeah, that's a Yeah, very nahin, valid nahin, example. yeah, I heard him. Yeah. Thank you very much, Mr. Banerjee. I fully understand what you said, and I have Yes. understood it also. Yes, The sir, yes. only issue was I couldn't solve that problem. That was The the issue. mathematical part of Okay, it. the digit one. Yeah, Yeah. sir, that is the X one thing. I mean, please do Yeah, it once I again. could not. Yeah, so that was the issue. Okay, sure. So anyway, Thank you so much for Ravi. the explanation. Thank you, Yeah. sir. So we'll just go for a short tea break. I think we can resume at 4:30. Yeah. No, it's 4:25 by my watch, Swamidev. Let's be back at 4:35 if everyone agrees. Okay, sure. All right. Thank you very much. Thank you. Thank you. I'll see you. Yeah.
Now it's 4:35, and if everybody is back and a little refreshed after the tea break, welcome back. And we'll for this next 1 hour, we'll be diving into understanding setting goals. हम लोग आज के सेशन में थिंकिंग बिग पिक्चर में भी हमने बात करी, कल से हम बात कर रहे हैं गोल्स SOPs are strictly clearly defined. Goals are given to us. But now as a leader, what does it take to set a goal? क्या सारे गोल अचीव होते हैं या how can we maximize the possibility of goals to become successful? ये सेशन उसी बारे में रहेगा. And सुरेश साशनी सर, गुड इवनिंग. आपसे मैं आज चर्चा नहीं कर पाया हूँ, ज्यादा आपके इनपुट्स नहीं ले पाया हूँ, but I hope we are gathering the insights, sir. You are muted, sir. Good evening, Ravi. Yes, sir. I am listening. And we are gathering insights, sir. Yes, So yes, sir. please work on the handbook also, whenever that you get time, sir. The inputs can be of some value as we go back to the work, sir. Okay. Thank you so much, sir. All right, so we are now getting into setting goals. I gave you the insight about on goal setting, and we are here trying to ascertain how can we maximize the possibility of setting the goals right, so that there are more chances for us to achieve them. So we'll be understanding what is goal setting and why do we need to do that? What are the attributes that takes the part of goal setting as important? What are the steps involved into setting those goals? We'll understand that, sir, when we design goals for ourselves personally or professionally, for our immediate under command or for the entire platoon or the troops that we have. What it takes, if we can define them into steps. So these are the 7 steps that we'll be understanding in next 1 hour, and we'll be taking away some insights to our work as we progress. Okay, so this is going to be the flow, sir. And if I have your agreement, let's understand in understanding setting goals, sir. Can I have a green tick or a thumbs up? Yes, sir. Giri, sir, thanks. All right, Ashwini, sir, Nagendra, sir. Thank you very much, Mohan, sir. Okay. So, सबसे पहले, let's understand the context through this word find puzzle, sir. 1 minute. अभी इस बार हम time को time की तरह रखेंगे, sir. 1 minute. Identify as many words as you can in this word find puzzle. Your time starts now. Okay, 5 more seconds. 3, 2, 1. All right, let's stop here. How many words did we find? Oh, 4? yes, 4. Okay. 3. 3. Wow. What else? 3. Dr. Sonkar? 3. 3. Okay. Suresh sir, 3. Antaryami sir. Kancham, 3 words. 5. 5. Wow, that's a bigger figure than 3.
All right. On chat, we have 6, 5, and 9 from Nagesh sir, Uday sir, Manoj sir. All right. Now I want to ask all of you. Abhi, how many of us? Of course, we identified 9, so we got interested. How many of us actually got interested into solving this? या हमारा इंटरेस्ट नहीं था कि क्या करना है? दोनों के रीजंस जानने हैं. इंटरेस्ट था तो क्यों आया, और इंटरेस्ट नहीं था तो मैं जानना चाहता हूँ क्यों नहीं आया. This will set the tone for our this session. I got interested due to the challenges it challenge. gave to us. This is a jungle of words, and we have to find the meaningful words. Yes, sir. That's So why. challenge accepted. So you found it challenging. Yeah. So you accepted it. Great, Antarya. It stimulated Anybody? our mind. Yes, I Mind agree, sir. stimulus. It gave stimulus to the mind. Okay. तो चलो दिमाग की एक्सरसाइज हो जाएगी. Let's do it. Went through Giri sir, your mind. What else? इंटरेस्ट ही नहीं आया इसमें. Brainstorming shut off. इंटरेस्ट नहीं आया. बस वही जानना चाहता हूँ सर. सच में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया इसमें. Okay, tell me sir, इंटरेस्ट क्यों नहीं आया? How could you make it more interesting? जब इंटरेस्ट नहीं आया तो मुझे क्या ऐसा होता? मैं आपको बताता हूँ. There should be some rewards. I tried initially to find some words. Yeah. And within 10-15 seconds, I don't find even a single word. So I just, and the time pressure was there. मैंने कहा क्या होगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा. I just left it. क्या बात है अश्विनी सर. बिल्कुल बिल्कुल आपने ऑनेस्ट बात कही है. This is exactly what goes through our our daily activities also. वैसे I was also not interested, but I started, so I got the 4 words here. अरे वाह महेंद्र सर. तो ठीक है, शुरू हुआ. हो सकता है वो 10-15 सेकंड that initial direction. Yes, that is the thing. That is the thing. जैसे ही वो ओवरकम कर गए तो हमें समझ में आया. अगर अश्विनी सर, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर मैं ये टाइम 1 मिनट की जगह 5 मिनट कर देता, तब शायद हमारे इंटरेस्ट जागता. अगर मैं आपको बताता कि ये 15 वर्ड्स हैं, इनमें से हमको मिनिमम 5 तो सामने ही दिख जाएंगे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हमें इंटरेस्ट ज्यादा आता? 5 तो हो गए. बिकॉज मेरे लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं. I lost interest because I just जिसे बोलते just lost in the jungle of letters. Again, and I don't find anything within that half of the period. Correct. Okay. And if I don't find anything, and the people are started giving answers. Yeah. So Grades. मैंने कहा कि ठीक है, सब लोगों को पता लो, कोई 3 ले लेगा, कोई 4 ले लेगा. क्या फर्क पड़ता है मैं अगर 2 भी ले लूं? मेरे पास कोई रिवॉर्ड सिस्टम नहीं था. मेरे पास वो चैलेंज सीधे सिर्फ टाइम का नहीं है. ग्रेट पॉइंट. I don't think the Yes, task was very trivial. नहीं था कुछ भी इसमें. Sir, some of us could find a challenge into smaller things. Some of us might need a better clarity. मैं जो इस सेशन के लिए सेटिंग गोल्स के लिए सभी का ध्यान आकर्षित यहाँ करना चाहता हूँ, वो रीजन यही है. How exactly out of all the chaos, the jungle of words or the activities that we have, the plethora of activities, all those SOPs to be fulfilled, everything, कुछ goals हम डिजाइन करते हैं कि हमने इस बार काम करके देना है. ठीक है, वो चीज जो बहुत टाइम से पेंडिंग है, हो सकता है पर्सनल हो सकता है प्रोफेशनल हो सकता है ऑफिस में हो सकता है घर की हो. गोल्स कैन बी एनीवेयर. ओके, तो जब हम बात करते हैं व्हाई एग्जैक्टली दैट वी एंड अप लूजिंग इंटरेस्ट, सर ये सेशन उसी के बारे में है. एंड हाउ कैन वी क्रिएट दैट इंटरेस्ट टिकलिंग फॉर अस, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट. I understand the way of the. Why should we bother setting goals? Yeah, so now I need your input, sir, very quickly. There should be some direction to our aim. To set direction, sir. इसलिए goals चाहिए होते हैं. बिल्कुल sir. Should be specific and objective. To accomplish mission, vision. Okay, accomplish mission
and vision. Okay. मेरे Taken, लिए sir. setting the goals is basically depending upon the task to be completed which is given to you. That's all. सर सबसे इम्पोर्टेंट तो है ही है, टास्क कंप्लीशन होना चाहिए। अब टास्क कंप्लीशन के लिए I will devise the goal to my teams कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। टास्क कंप्लीशन के लिए क्या-क्या चीजें चाहिए एंड उनके लिए फिर मुझे टीम बनानी पड़ेगी। यार टीम को बनाने के लिए उनको गोल्स कूलर आए ने दो just have to achieve ये लगा दो इथे बैरक this and you have For to the achieve better बैरक execution, च नहीं कूलर this. That's all. तुम्हें बैरक च लगा for the दो पर better लगाओ execution. प्लाई भी खरीदनी पे तो खरीद लांगे प्रॉपर फिट कराओ एक बार खुद जाके देख लो किथे लगा है। अरे कौन कौन है इसको बंद करो। Okay, Gurinder sir, may I politely request you to mute yourself for the benefit of everyone? Thank you. Mr. Ravi, Yes, sir. feel good after achieving goal. Realize and cherish success. Yeah, yes. It gives you the clear direction for Yes, moving sir. forward. Bringing clarity and tracking. Basically, वो आप जो direction की बात कर रहे हैं सर, क्या मैं उसको बोलूं कि tracking progress की बात करें हम? Yes. Clarity Okay. and tracking. Actually, when we setting goals, there is Initiate a system. actually there is the system. Initiate a system, Rotelo sir. Can you elaborate on this? Unless until we set goal, like you have just put, suppose you just put the word, the previous exercise you have given, and you don't write anything. So everybody might be doing of its own. Somebody Yes, might be finding 6-letter word, somebody 2-letter word, or somebody may just be looking on it. Now, unless until you set a goal, you have to do this. So then you initiate a system that on a particular track the things are going. So you unless until you set goals, you cannot initiate anything. Bilkul sir. So I have mentioned initiate and track. Exactly. actually we should divide goal in short-term goal and long-term goal. So while we do short-term goal, we prioritize certain things, and for long-term goals, we also prioritize certain things. But for long-term goal, in long-term we achieve remarkable achievements, and that should be our aim. भगत सर बिल्कुल मेंशन सर आपने तो एकदम सम अप कर दिया। टू प्रायोरिटाइज, मुझे करना क्या है ये तो पता हो, चाहे शॉर्ट में हो चाहे लॉन्ग टर्म में हो। करेक्ट, वो तो डिवीजन आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन टू प्रायोरिटाइज, तो गोल्स हमें प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल। Like to add one thing, goals should be time bound and achievable Time as boundation to our capability. to manage time. Absolutely, sir. For self-assessment. For self-assessment also. For ascertaining, for assessments. Yes, sir. For self-assessment. better utilization of talent to achieving something special, something difficult task. बिल्कुल अरुण सर, पॉइंट एब्सोल्युटली वेल टेकन। और ये अगर आपकी सभी की बातें जो मैंने यहाँ मेंशन भी करी थी तो सम अप करूं तो अल्टीमेटली one more thing I would like to add this benefits of goals. गोल का हमारा बेनिफिट क्या है, इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव का है सबके ऊपर जी। अगर वो सबको मालूम रहे तो उसमें हमें आसानी रहेगी हर चीज को सेट करने में। एग्जैक्टली, टू आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट सर। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम हमारी जब हम बात कर रहे हैं इन सब चीजों को अगर हम एक कलेक्टिव रिसर्च में डालें तो टू हैव दैट फोकस कमिंग इन फॉर अस, गोल्स आर इम्पोर्टेंट सर। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन, ये आज नहीं कल करेंगे। खास तौर पे हम, आई एम श्योर आप लोग प्रोफेशनली तो बहुत डिलिजेंटली इन्वॉल्व हैं, पर्सनल गोल्स के लिए हम कहीं ना कहीं ये प्रोक्रास्टिनेशन वर्ड बहुत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा करेंगे, इसको बाद में करते हैं, कल से शुरू करते हैं, संडे से शुरू करते हैं। ऐसा होता है हमारे साथ सर। स्पेशली अगर मैं पर्सनल पर्सपेक्टिव में बात करूं, हो सकता है प्रोफेशनली भी होती हो कई चीजें जब हमें लगता है ये नॉट सो इम्पोर्टेंट है, तो चलो इसको छोड़ो, कल देखते हैं या परसों देखते हैं या अगले हफ्ते देखते हैं, कल से ट्रिप के बाद देखते हैं।
Correct? छोड़ूंगा, कल से करूंगा. Exactly, sir. So मिस्टर रवि, ये जो आप बोल रहे हैं इसमें हमारे मेरे ख्याल से जो फोर्सेस में ये अदर वे आउट है. अच्छा सर. तो जो टास्क मिलता है वी ट्राई टू कंप्लीट इट एज सुन एज पॉसिबल. Yes sir. Yes. Of course sir, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ आपकी बात. मैंने तो सिर्फ assume किया. All I'm saying is, sir, देखिए, goals are not confined to my professional levels only. We agree to this. Goals can also be personal. Yes. So if I'm wanting to sum up, जैसे अश्वनी सर ने भी मेंशन किया, मान लीजिए, I don't know वो उसका पॉइंट ऑफ, मेरे पर्सनल एग्जांपल, मतलब जो सोच का एग्जांपल आ रहा है, I want to quit smoking. If it is my goal, what do I do? कल करूंगा. कल करूंगा. आज पी लेता हूँ, कल करूंगा. Exactly. चल ये आखिरी. हाँ, ये आखिरी है. ये डब्बा आखिरी. ये डब्बे की सिगरेट आखिरी. Could be anything. We end up procrastinating, sir. So if we set proper goals, our procrastination levels, they go down. This is where I'm trying to bring the focus on. It of course gives us motivation. It keeps us accountable, as you rightly mentioned earlier also. We can track progress if we have a set and defined goal and realize the potential, use the resources very well. So absolutely, sir, आपके points out of experience बिल्कुल बराबर रहे हैं इस पे. Let's understand what are the attributes of a goal. So attributes में जब हम बात कर रहे हैं, so there are three things that we have to keep in our mind, sir. The first is why this goal. So अगर मैं वापस example लूं, if I want to quit smoking, so why do I want to quit smoking? I need to identify that. Is it just out of impulse? Everybody is telling me that we should quit. Is it just that is the reason? Or have I identified the reason? Why do I need to quit smoking? So if I have the right origin coming in for my goal setting, my goal becomes much more, owned by me than just being a simple goal. The second part is significance. रवि जी, बैक Yes, sir. स्लाइड जरा एक बार प्ले करें. बैक स्लाइड इसके पीछे वाला. Okay, sir. Why not? इसके This one? पीछे. Yes, yes. Yes, sir. Thank you. Okay, sir. It is also mentioned in your, I think, handbook. We can check there also, sir. Okay, so we are coming back to the second part of the attribute of a goal. पहला origin समझ में आया? Are we clear? So the origin has to be right. We have to ask the right why question. Why am I setting this goal? Okay, and once I have this, then what is the significance? What is there for me in this goal? If I can identify that, मैं अगर cigarette smoke करना छोड़ता हूँ, then I can probably find myself into, having more fresh sleep, less sleeping hours, but fresher, refreshed body and mind. Could be that significance. वो goal मेरे लिए लेके आ सकता है. And then ultimate result क्या है sir? इसका outcome क्या होने वाला? I'll find that I breathe more properly. I find that people around me, I don't have to take more breaks for smokes. मैं office में ज़्यादा time दे पाता. I can spend better time and quality time with my family. I can end up saving a lot of money. On the lighter notes. Yes, sir. My girlfriend want to quit me smoking, and if I quit smoking, I will get my girlfriend back. Okay. So ultimate outcome can be there, sir. And the second motive is, I had the health conditions due to the smoking, and the significance is, I will be getting the better health conditions. Yes, sir. Action is, I will be getting the better health conditions. Absolutely, Ashwini sir. These are the two different origins of that goal setting. Okay, so origins, acha, you are blending them. Of course, they can be, if they motivate you enough, sir, the origin is right. It's as simple. So, आपके दोनों points अगर मैं validate करूँ यहाँ पर, if my origin is motivating me enough, then my goal attribute is fine. If it is generic, then वो general के साथ आया तो general के साथ निकल जाएगा. I will smoke again. Yeah. So great. I'm happy about this input, sir. I hope everybody is clear about the attributes part of it. I want to take you through. Give me a moment, sir. Yeah.
दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, और मैं चाहता हूं इसका आप स्क्रीनशॉट रख लें. And can I request my team, Tanvi, Swamidev, anybody from IT, What words you use to describe the challenge? get into a breakout for about 3 minutes. 3 questions हैं. सर मैं इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ. Use to describe the challenge. The activity is. I we would have to- suggest 5 minutes of breakout. Sorry. Yeah. 5 minutes. Okay. Okay, Swamidev. Let's go in for 5. I'll enter the breakout rooms as well. मैं एक मेरे बार कोहोर्ट को थोड़ा सा समझा देता हूँ एक्टिविटी क्या है, and we'll also brief them about with the breakout clearly. Okay, so Confident, what you success at the onset? What gave you confidence? yes sir, ये 3 सवाल हमें जानने हैं. हम लोग Starting ब्रेकआउट रूम में जाएंगे अभी. You'll be unmuted and we'll enter a breakout room where we can discuss freely amongst the group members. We have to think about a time where we achieved something that you are proud of, sir. Okay, it can be one thing that you are really proud of. And उस चीज पे we have to identify these 3 questions. How would you describe in words वो की challenge को? And how confident were you is the second question. And what gave you that confidence? Third question is, what enabled you to achieve that? Are we clear, sir? Everybody? हमें क्या करना है? Sirs, everybody? Are we clear? Please elaborate on first line. All right, sir. We have to basically, discuss in group what you have achieved that you are very proud of. कोई ऐसा achievement होगा past का, चाहे वो BSF का हो, personally हो, कैसा भी, something that you are very proud of. Okay? पहले वो identify करेंगे, and then उसके 3 सवाल पूछेंगे हम. What words? How would you like to describe that challenge in words, sir? ठीक है? दूसरा, how confident were you of the success at the onset? ठीक है, क्या हमें लगा था कि अचीव कर लेंगे या हमें लगा कि नहीं करेंगे? It could be your experience, sir. What gave you that confidence to go forward? And third is, what enabled you to achieve that? क्या चीज आपके साथ में आई जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिली उसमें? All right, are we clear now? I had doubt in that exercise. Yes, sir. As a group, say my challenges were different, which I am Yes, proud sir. of, and yours are different. Of course, sir. So how can we commonly discuss that thing? Sir, it's not about common. ये तो आप अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग कर रहे हैं. मैं यहाँ क्या कंप्लीट ग्रुप की जगह छोटा ग्रुप बना रहा हूँ. एक्सपीरियंस शेयरिंग है कि अच्छा ये है. Okay, ठीक, done it. I will All right. check. Okay. So you'll be getting a notification. Please click approve to enter that breakout room, and we'll be in that group. I'll be entering that group also. I'll come and check how we are discussing. और इसी पे based हमारा rest of the exercise रहेगा. All right. So Swamidev, are we in? Yeah, we are on the process. Just 1 second. All right. So we have this notification. You will be unmuted. Please join. Requesting our commandants to please join the respective rooms. Okay, Ajay sir, Arun sir, yeah. Let's join a room and let's discuss.
हाँ चश्मा तो पहले से ही है में भी तो चश्मा लगाते हैं सर। हाँ चश्मा पहले से ही है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। गिर सर देखे नहीं होंगे लग रहा है। था सर, उसमें भी था, सीनियर कमांड में भी था। हाँ हाँ All right, that's sir. We were not a part of the group. किसी रूम में नहीं एंट्री हुए हम. Okay, Bipin sir, Ramesh Ram sir, Ghanshyam Das sir, welcome back. Murthy sir, good evening, welcome back. So, were we a part of any breakout room? नहीं, हम एंटर नहीं कर पाए. Bipin sir. Okay, so everybody is returning. Welcome back from the breakout rooms and the discussions. I entered a couple of rooms and there were some deep discussions going on. मैं सबके साथ तो सबके inputs तो नहीं ले पाऊंगा, but I would like to have somebody to volunteer and deliberate on what we discuss in the breakout. Ravi, sir, if you don't mind, I would ask Arun, sir, you were please saying, talking to me in room number 4. You had a wonderful, a challenge which was beyond your professional life as well. If you don't mind sharing with the group, please, what was the challenge and just 3 question आपको क्या लगता है, please. Room number 4. Arun, sir. Room number 4. Number 6. Arun, sir, you were in room number 6. Room number 6 नहीं थे. Room number 6. Room number 8 5. Room number 5. Room number 5. 5 में थे Arun, sir. Yes. Arun, sir, just to complete your thought because we got cut off, please. So, मैं अपने डॉटर के रिगार्डिंग में बात करना चाह रहा था कि she joined +2 in Ranchi school. Firstly, she joined science stream. जो मेरी चाहत थी वो कंप्यूटर इंजीनियर की तरफ जाए वो. She was in very good in maths and science section. After 6 months, she told me, "Papa, I'm not I'm not interested in science stream." So, commerce stream. So I become so desperate and hopeless कि अब ये कुछ नहीं कर पाएगी. मैं भी काफी निराश हुआ. लेकिन फिर हम पेरेंट्स ने जो है डिसाइड किया कि नहीं, ये जो पढ़ना चाहती है पढ़ने दिया जाए. तो आफ्टर 2-3 मंथ्स हमने उसको इनकरेज किया, उसको काफी मोटिवेट किया. एंड देन फाइनली she topped in the commerce stream final in CBSE +2 exams in her school. So I feel very proud of her, and I've become so happy
She after she joined in Lady Sri Ram College of Commerce. Wow. So I am become very proud of her and at that time. For इसके लिए चैलेंज जो मुझे सहना पड़ा या जो चैलेंज मेरे पास था, तो उसको था कि मोटिवेशन, डेडिकेशन उसमें डेवलप करें और उस बच्चे को जो चाहने की, जो पाने की इच्छा थी, उसको पाने दें। बस ये था। बहुत खूब अरुण सर। इनफैक्ट ये एक ऐसा चैलेंज है जहां हमारे इमोशंस भी हाई होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस भी हाई होती हैं, और फैमिली में जब भी आते हैं, when our kids are taking decisions, it becomes all the more challenging. But when it becomes success, so I think your daughter is doing great, and she'll be able to answer what enabled her. Probably that trust that you showcased. Yes. Okay. So that probably enabled her, and that acceptance enabled her further. Great, great experience, Arun sir. Thank you very much for sharing that. So, anyone else, very quickly, if you'd like to sum up the discussion? Antaryami sir, I think you were discussing. I was in that room. Or anyone else? Feel free. Bhagat sir, you were there. Yes, we were discussing, and Yes, sir. Alagi Gurinder narrated a very good achievement story. I will request him to come out. Otherwise, I have also a story. So, but I would prefer Gurinder. No, sir, we would like to listen to you, sir. We would like to listen to your experience, sir. Please, sir, please, please. Okay, so I will quickly narrate it. Yes, sir. Way back in 2002, I was deployed in J&K and CI Ops role. So we had been given a task to search for the militants, probable movement of militants. इधर ही तो है, नजदीक ही तो है, पंजाब हरियाणा एक ही में, पंजाब हरियाणा हिमाचल। Ghanshyam. So there was a joint operational team. Am I audible, please? Yes, sir. Please carry on, sir. The 3 battalions were involved, and our column was searching on the top of a hill, and this was very tiresome because 4 to 5 hours had gone and we got nothing. So I redeployed my column, and they were told to reposition themselves. So I was laying down on a piece of a stone. अब तो सब कुछ हो गया, अब तो कुछ मिलना उलना है नहीं, अब तो कुछ देर में ऑपरेशन कॉल ऑफ हो जाएगा। नीचे एक दूसरे यूनिट की कॉलम लगी हुई थी। So the challenge was the situation was unpredictable and daunting. Suddenly one of my boys, he saw something moving towards the downhill amidst the dense jungle. And 2 to 3 men were moving in combat dress. So he informed me, sir, there is a movement down below. So then I thought at that part of this hill, there is no deployment, or there is no deployment troops of BSF. How come some people are moving in combat dress? So yes, and after some time, it was obvious that they were militants because the dress was different and they were hurriedly moving towards that part of it. So quickly we regathered and repositioned ourselves, and we challenged. There was initiation of fire on my command. They also fired back, and after 10 to 15 minutes of firing, the firing stopped from their side, taking all precautions. We moved toward the site of encounter where they were moving, and we got one dead body of militant along with huge cases of arms and ammunition. The point here is that I had lost the hope that we will not get anything today, and the operation was about to call off. But in the end, we got good success,
and that's all. This was the story. That is an amazing experience, Vantarami sir. And I think what I can identify and read from it is what enabled you to achieve success is that belief system, that self-belief, that it is my responsibility, so I'll carry on. I Yeah. think could be the part of it. The raw courage and trust upon my team. Absolutely, sir. And we were absolutely confident कि come what may, if we get the militants, we sight upon the militants, we will kill them. Great, sir. Great experience sharing. In fact, I'm sure हम सभी ने कहीं ना कहीं अपने ग्रुप में ये डिस्कशन जरूर किया होगा. But keeping the time in check, let's move further and understand what it takes to set goals. And there are these 7 steps in defining our goals for us. So what I want all of us to do is keep a goal in your mind. इसको हम अगले we'll take it a little in a quicker mode. So एक goal अपने दिमाग में रखिए. It could be personal or professional, as you may like it. But वो goal होना important है सभी के दिमाग में, जिससे ये 7 steps हम implement करेंगे अभी इसी workout to understand these steps better. Okay, and give me a confirmation once we have thought about a goal. Chat पे आप done लिख सकते हैं, okay लिख सकते हैं. Yeah, done. Bhagat sir. In the goal that you would like to pursue. Yes sir. महेंद्र सर. तो एक गोल दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर. अदरवाइज बिना बेस के हम बिल्डिंग किस पे खड़ी करेंगे आज. All right, Das sir, have you thought about a goal? ठीक है मैं जो है अभी यहाँ पे क्लास में. ठीक है ना. ओके. Okay, on chat I have confirmation. Done. Surinder sir, Ashok sir. All right, Ashwini sir, you've mentioned it straight away. Great, done. Man Singh, Radhesh sir. All right, so let's understand each one of them. The steps one by one. How do we explore meaning around the goal? The goal that you have thought of can be concentrated to 2 parts. It can be centered to you, or it can be centered to the wider context. How? Let me give an example. जब Lincoln NASA center गए in the past, so he asked the janitor, सफाई करने वाले से पूछा, what do you do here? And he said, I put a man on the moon. So एक janitor, एक सफाई करने वाले को भी ये मालूम था कि मेरी responsibility, जो एक vision है पूरी organization का, वो मुझसे कैसे percolate होता है, what is my part of it. तो वो हुआ मेरा wider context. And the goal, if it impacts me, for example, for whatever goal that you've thought, I'll take the example of Ashwani sir, that he's mentioned, I want to quit smoking. How will this goal impact you? मेरी health अच्छी होगी, मेरे को नींद अच्छी आएगी, मेरे vitals improve होंगे, ये मेरे को impact कर रहा है. जब ये होगा, अगर ऐसा मैं करता हूं, तो ये impact wider context में कैसे जाएगा? मेरी टीम यूनिट मुझसे इंस्पायर होगी, जो लोग बाकी स्मोक करना छोड़ना चाहते हैं शायद वो भी छोड़ दें, एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होगा, टाइम नहीं वेस्ट होगा. सो वाइडर कॉन्टेक्स्ट, एवरीथिंग स्प्रेड्स आउट. सो दीज आर द 2 centers where we can explore meaning around the goal that we have thought about. Okay, are we clear? Can we understand both the context? So which one would you like to focus on for the goal that you have thought of? बताइए सर. Which will impact me straight away. Okay, so you like to focus on. Yes sir, absolutely. दोनों चीजें important है. आपके गोल जो हम सभी ने अपने दिमाग में रखे हैं, उस गोल के लिए आप कहां पहले फोकस करना चाहें? So that's my basic direct question. Use the chat. इस बार हम chat use कर रहे हैं.
quick. Okay, Rotelo sir, you've also mentioned here that your goal is to control your anger. तो आप अपने एंगर मैनेजमेंट के लिए इसका वाइडर कॉन्टेक्स्ट देखना चाहेंगे या अपना डायरेक्टली हमारा कॉन्टेक्स्ट जो आपको इम्पैक्ट करता है उस पर देखना चाहेंगे? Which one would you wider context में देखेंगे because it is impacting more others than me. करेक्ट सर. तो वाइडर पे भी अगर फोकस रहेगा तो मेरे पे भी इम्पैक्ट आएगा. करेक्ट. ऐसे ही अश्वनी सर का अगर वो अपने पे देख रहे हैं तो भी वाइडर पे तो इम्पैक्ट जाना ही जाना है. तो कोई ऐसा नहीं है सेटिंग गोल के लिए क्या है कि ये सही है या वो सही है. इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे को मीनिंग कहाँ एक्सप्लोर करना है पहले एंड देन आई हैव टू स्प्रेड आउट. ऑलराइट. So great, thank you for that input, Rothela sir. And let's understand the next part. The second step in creating meaningful goals is to challenge ourselves. How do we create a challenge around what we have thought as a goal? कैसे कर सकते हैं सर? Help, Bhagat sir, you focus on that. मानसिंह सर वाइडर कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लोर करना चाहेंगे? Yes, health is that primary issues in which every all dependent upon one way or other way, and there are two things. One is preventive, another is in-house what we can do at our level. Yep. For example, like as just I quote one example, there was one offer from ICICI Foundations that whatever health equipment you would like to demand, you do demand. And I consulted some specialists, and I have given that automatic analyzer, semi-automatic analyzer, H1B1, then other equipment including digital X-rays and traction equipments and others accessory, total 10 type of different things. So Okay. we got that, and some of us also requested for weighing machine and height bar. They also got weighing machine and height bar. But however, as the ICICI Foundation gave us, we are now fully equipped as a one of the best clinical hospital. Though we don't have doctor posted since last 1 year, but our men are doing all clinical examination at our levels. So Great, my achievement is more or less met. Not achieved, but met, somewhere met. बेसिकली अगर मैं सेटिंग गोल के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो यू हैव फोकस मोर ऑन द वाइडर कॉन्टेक्स्ट. इट इज नॉट जस्ट योर हेल्थ बट द हेल्थ ऑफ एवरीबॉडी एल्स अराउंड यू. करेक्ट. तो बिल्कुल Yes. बिल्कुल मीनिंगफुल है सर. बिल्कुल एब्सोल्युटली बैंग ऑन. नाउ वी हैव मूव्ड ऑन टू हाउ डू वी क्रिएट अ चैलेंज अराउंड दिस गोल. देखिए मैं आप सभी को बता दूं 3 तरीके होते हैं अगर हमें किसी भी गोल पे चैलेंज क्रिएट करना है तो. यू रिमेंबर जब मैंने वो पहले एक्सरसाइज कराई थी फाइंडिंग द वर्ड पजल जो मैंने जंबल करवाया था आपसे, उसमें हमारे पास चैलेंज किसी को लगा किसी को नहीं लगा. अब यही चीज है जो भी गोल मैंने सोचा है उसमें अगर मैं टाइम कम कर दूं तो मेरा चैलेंज बढ़ जाएगा. यस और नो? अच्छा मिस्टर अभी. यस सर. प्रमोद सर. अच्छा गोल सेटिंग इज जो है मैंने लिखा भी है उसमें बहुत ही पर्सनल है ये. बिल्कुल सर. क्योंकि इसके इतने एस्पेक्ट्स हैं. यदि आप जो है वाइडर एस्पेक्ट में या वाइडर कंटेस्ट में यदि आप गोल सेट करते हैं तो उसमें इट इज वेरी डिफिकल्ट. यस सर. बिल्कुल. महात्मा गांधी जो है जब अफ्रीका से लौटे 1919 में तो उन्होंने गोल सेट किया कि हम जो है इंडिया को 6 महीने में मुक्त कर देंगे. 6 मंथ उन्होंने टारगेट गोल सेट किया था. बिल्कुल सर. लेकिन वो 6 मंथ से देखो आप कितना टाइम लग गया. 1947. बिल्कुल तो सर. कंटेक्स्ट में यदि आप लेते हैं तो आपको जो है बहुत सारे जो है चैलेंजेस हैं जो उनके ऊपर आपको जो है वो करना पड़ेगा, फतेह करनी पड़ेगी. बिल्कुल सर. बहुत ही पर्सनल है. जैसे मान लो तंबाकू छोड़ना, ठीक है, सिगरेट छोड़ना, इस टाइप के आप गोल ही सेट कर सकते हैं. सर बट एक चीज जानना चाहूंगा, क्या गांधी जी ने जो सोचा क्या वो सक्सेसफुल हुआ? वही मैं कह रहा हूं. जैसे मान लो हम वाइडर एस्पेक्ट में बता रहे हैं
कि गोल सब जब उन्होंने सेट किया, जब वो आए लौट के, उनका जो एक्सपीरियंस था साउथ अफ्रीका में, जो उन्होंने मूवमेंट वहां पे चलाया था, तो जो एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया था, उन्होंने जो है अपना सेट किया गोल कि इंडिया में जिस हिसाब से उनको जो है यहाँ पे वेलकम हुआ, जिस हिसाब से उनको जो है लीडरशिप मिली यहाँ पे, तो उन्होंने गोल सेट किया कि हम 6 मंथ में जो है अचीव कर लेंगे, बिल्कुल करा देंगे। लेकिन देखिए आप, जितनी जो है अदर फोर्सेस थी, उनको जो है एक उसमें लाइन में लाने के लिए कितना वक्त लग गया। बिल्कुल सर, तो यही आपका बहुत ही प्रमोद सर, पर्सनल जो है आप गोल ही जो है अचीव कर सकते हैं, बहुत ही पर्सनल। बिल्कुल सर, जब हम टाइम बाउंडेशन की बात करें, 6 महीना एक इतनी बड़ी कंट्री को आजाद कराने के लिए वाज एन अनरियलिस्टिक गोल। मैं आप यदि कहें तो मैं एक जो है शेयर करना चाहता हूं अपना एक्सपीरियंस। बिल्कुल सर, व्हाई नॉट सर। आप यदि अलाउ करें, मैं कश्मीर में था 2099 की बात बता रहा हूँ। जी सर। एक हमारा सोर्स था, वो जो है बहुत, मतलब कहना चाहिए बहुत बड़ा सोर्स था। वो जो है मिलिटेंट्स के साथ में रहता था, वो ग्रुप के साथ में, और इवन उसने उनके साथ में हाइड आउट्स भी बनाए हुए थे। तो मैंने जो है गोल सेट किया कि इसको मोटिवेट करके हम उसके साथ में, उनके साथ में मिलकर के ये हमें ग्रुप से जो है मिलवाएगा वो। तो हमने सेट कर दिया था अपना गोल, लेकिन उसके बीच में कई जो है प्रॉब्लम्स आई कि लोग कहने लगे यार इतना बढ़िया जो है इनका सोर्स है, लेकिन कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं। तो कई जो है ऐसे अफसर होते हैं, उनको तुरंत चाहिए होता है, तुरंत चाहिए होता है। तो उन्होंने क्या, उसको बीच में मेरी बिना कंसेंट के उसको उठा लिया। उठाने के बाद में पिटाई मिटाई करके उसने सब कुछ बता दिया, हाइड आउट वगैरह बता दिए, दुनिया भर की आईडी मिल गई, दुनिया भर का सामान मिल गया, कहानी खत्म हो गई। अब उसने जब जो है वो मेरे को बुलाता रहा कि सर को बुला दीजिए, सर ने तो मेरे से पूछा ही नहीं, क्योंकि हमने गोल सेट कर रखा था दूसरा वाला कि हम ग्रुप को चेपेंगे, पूरे ग्रुप को विद जो है वेपन। तो उसमें क्या हुआ कि उसने थोड़ा सा अपने आप को गिल्टी फील किया कि मेरी जो है इसमें बदनामी हो जाएगी कि हम अपने एरिया में कुछ नहीं पकड़ पाए। उसने मेरे को फिर एक नाम बताया, वो बोलता है कि सर मैं आपको जो है कुछ देना चाहता हूं। तो उसने एक बताया कि पिस्टल जो है, एक पिस्टल है, और उसने नाम बताया रहमान, और उसने गांव बता दिया कि इस गांव में है सर वो रहमान है, रहमान डार करके लड़का है, उसके पास में पिस्टल है। अब चैलेंजेस शुरू हो गए, चैलेंजेस हमारे लिए चैलेंज शुरू हो गया। रहमान के आगे क्या है, फादर का नाम क्या है, कौन रहमान है, कितने रहमान है। अब वो पता चला उस गांव में 5 रहमान है। अब उसको नाम पता था, अब आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्ट में कौन रहमान है। तो उसको पहले एग्जैक्ट बंदे को लिया गया, उसको ऐसा टाइम में उठाया गया कि वहां से पिक भी करना है, चैलेंज वो भी था उठाने का। अब जब उसको लेके आए, जब इंट्रोगेशन हुआ, तो वो बोलता है कि नहीं सर हमारे पास में एक एके है, 2 एके बताने लगा वो, 2 एके राइफल है, 2 पिस्टल है, कई ग्रेनेड उसने बता दिए कि ग्रेनेड भी है। अब बताइए एक पिस्टल के लिए उसने इतना सारा सामान बता दिया। हमारे पास चैलेंज है कि कैसे निकलवाएं, कि सत्य क्या है। अब वो बोलता है कि पहाड़ पे सर हमने एक हाइड आउट बना रखा है, वहां पे है। अब वो ले गया पूरी फौज को पूरे पहाड़ पे, उसने सुबह से शाम तक पूरी परेड करवा दी ट्रुप्स की। जाकर के ट्रुप्स गुस्सा हुआ, फिर उसकी जो है इंट्रोगेशन शुरू हुआ, फिर उसको पिटाई की। यहाँ पे ये चैलेंज है कि मरमरू ना जाए और अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, कई जगह उसने गड्ढे करवा दिए। अब उसके पास से सामान भी निकालना था, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि उसके पास था। बाद में उसने अपने गांव में ही बोला सर मैं यहाँ पे गाड़ के रखा हुआ है। उसने 6 फीट गहरा और कम से कम 8 फीट गहरा, 8 फीट चौड़ा उसने एक गड्ढा करवा दिया। कहा भाई ये फाइनल हो गया। जब उसको उसी में डाल करके जब मिट्टी डालने लगे उसके ऊपर, तब बोलता है सर मर जाऊंगा। मैं बताता हूँ, उस बंदे ने एक पेड़ के नीचे जस्ट 6 इंच जो है उसने गाड़ रखा था, निकाल करके 2 मिनट में उसने दे दिया। लेकिन उसके लिए जो है कितना चैलेंज था
उससे ये रिट्रीव करने के लिए, निकालने के लिए जब मिला तो सारी फौज जो है खुश हुई, सभी लोग खुश हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, वो ग्रेविटी बिल्कुल समझ में आती है। थैंक यू फॉर आपने इसमें शेयरिंग। बहुत बढ़िया वक्तव्य दिया सर। इसमें गोल भी हो गया, चैलेंज भी हो गया, अचीवमेंट भी कवर हो गया। वेरी नाइस एग्जांपल सर। अग्रवाल सर, थैंक यू गुरिंदर। हाँ जी सर, तीनों चीजें समराइज आपने मैं एक्चुअली में एक छोटा और एग्जांपल आपको इसी का बहुत अच्छा देना चाहता था। दीजिए सर, दीजिए गुरिंदर का भी एरिया है, दीजिए सर। जस्ट अभी हमारे यहाँ गवर्नर का विजिट था, मुझे जो है डीएम का फोन आता है, बोले गवर्नर साहब जो है आ रहे हैं, और सोलली जो है सिविल प्रोग्राम है, ये बीएसएफ का कोई हस्तक्षेप नहीं है इसमें। तो हमने कहा भाई ठीक है, जो मदद वो मांगते हैं, पहले मुझे डायरेक्शन दिया गया कि भाई जो भी मदद वो मांगते हैं आप केवल वहां पर उपस्थित हो जाना, और जो भी वो मांगते हैं रूम जो भी चाहिए है रिसोर्सेस, वो उनको प्रोवाइड करवाना है। सडनली क्या होता है, सडनली डीएम जो है आईजी से बात करता है, और वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है। आईजी साहब मुझे कहते हैं कि नहीं यार, ये सिविल का प्रोग्राम नहीं है, ये अपना प्रोग्राम है और कंडक्ट करवाना है, इसमें किसी तरह का वो नहीं है, सिविल लेवल का कोई नहीं है, अपना प्रोग्राम है। दैट मींस इमीडिएटली सर चैलेंज बढ़ गया, क्योंकि टाइम लिमिट हो गया आपके पास में। बढ़ गया। करेक्ट सर। अब इसको पूरा का पूरा अपने प्रोग्राम की तरह ऑर्गेनाइज करवाना है। तो देन एंड देयर फिर सारे के सारे जो है उसको उसको जो है पहले अपन ने अप्रिशिएट किया गया कि क्या क्या हमको चाहिए है, क्या क्या हमारे पास में रिसोर्सेस हैं, कौन कौन से, चाहे जो है मैन पावर को लेकर के हो, चाहे ऑफिसर को लेकर के हो, चाहे मटेरियल को लेकर के हो, सारे जो है जितने भी अप्रिशिएट वो थे, जितने भी एस्पेक्ट थे, उनको सोचा गया। और बेहतरीन से बेहतरीन होना चाहिए, मतलब जिसमें हमारा एक नादाघाट है, वो सीमा दर्शन प्रोजेक्ट है, वो वहाँ की हर एक्टिविटी जो है नेशनल लेवल पे जाती है, और उसको प्राइम मिनिस्टर जो है पर्सनली देखते हैं वहाँ की हर एक्टिविटीज को। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। अब ये देखिए, विद्या जो है लाइजन ऑफ सिविल अथॉरिटीज, वो सारी चीजें उनके कई जो है गाँव में प्रोग्राम थे, और हमारे यहाँ जो है केवल उनको लंच था, आने के बाद रिसीव करना था, और टीम जो है ऑफिसर्स था। तो वो सारी चीजें कर दी गई हैं, और लौट के आकर के पहले प्रोग्राम था उनका नाइट स्टे का, ठीक है ना। तो नाइट स्टे खत्म हो गया, एक दूसरे दिन जो है लंच का प्रोग्राम था। गवर्नर साहब जो है विजिट करते हैं एरिया में, गाँव में जाते हैं, उसी रात जब सारी चीजें कंप्लीट कर दी गई, तेज आंधी और बारिश ने सारा का सारा खत्म कर दिया। उसके पहले, आने के पहले सारा इंतजाम, बहुत बड़ी चैलेंजेस अब आपकी जो है शुरू हो गई। इधर कलेक्टर भी परेशान है, डीएम भी परेशान है, सिविल अथॉरिटी परेशान है, इधर स्वाभाविक हमारा प्रोग्राम है, तो यहाँ पे बीएसएफ भी परेशान है। तो फाइनली उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया, सारी चीजें व्यवस्थित रूप से की गई, और जो है गवर्नर साहब यहाँ से भूर प्रशंसा करके बीएसएफ के गए। एक्सीलेंट सर। इनफैक्ट आपके इस एग्जांपल पे मेरे को ये तीनों पॉइंट बहुत क्लियरली डिफाइन हुए हैं कि टाइम अगर हम कम हमारे पास में होता है तो चैलेंज बढ़ जाता है। आई एम श्योर ये चैलेंज, देखो एक चैलेंज और आ गया इसमें जो प्रोग्राम उनका नाइट स्टे का नहीं था और दूसरे दिन केवल लंच करना था उनको, उन्होंने बॉर्डर विजिट का भी प्रोग्राम बना दिया, बॉर्डर विजिट का भी, कि बॉर्डर न्यूनेस वाज देयर, जो एग्जिस्टिंग था उसमें न्यूनेस भी आ गया। सो ग्रेट इन डेलिब्रेशन प्रमोद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस। इन फैक्ट आई थिंक द कंप्लीट कोहोर्ट विल अंडरस्टैंड ये तीनों पॉइंट हमारे जैसे टाइम के अगर हम एडजस्टमेंट कम हो जाता है, वी क्रिएट अ चैलेंज अराउंड इट, लेवल बढ़ जाते हैं कि वो बीएसएफ का था या नहीं था, वो सडनली हुआ कि वो बीएसएफ का हो गया, so the level has increased, the newness has happened, the change in routine happened। इसलिए हम लोग जो है मिस्टर अभी, इसलिए हम लोग अप्रिशिएट करते हैं चीजों को, और कंटिजेंसी बहुत सारी रखते हैं, 2-3 कंटिजेंसी रखते हैं। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली। कमांडर्स जो हमारे बीएसएफ के हैं, जो बीएसएफ आज फ्लैगशिप उसका झंडा ऊपर है, यही है कि हम लोग जो है कंटिजेंसी बहुत रखते हैं।
छोटी छोटी चीज को जो है परस्यू करते हैं, छोटी Of छोटी course, sir. Of course, to put it into action, contingencies are important, sir. But अभी हम वापस फोकस लेके आते हैं गोल सेटिंग पे. So the next step for a goal जो आपने सोच के रखा है इस वक्त, जो मैंने भी आपको कहा था कि गोल दिमाग में रखना है, उसके अराउंड क्लैरिटी हम कैसे लेके आते हैं. ये दो सिनेरियोज है सर. क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगा, which one do you find to be more clear, sir? पहला वाला हम बात करते हैं, लेट इट बी ए and this one is B. Which one do you find has better clarity? Obviously B. Okay. So for the goal that we have thought of, sir, Mohan sir, can we have a complete clarity about that? Or is it just जैसे यहाँ mention किया गया chat पे, Ashwani sir, quit smoking. I'm taking your example, Ashwani sir. I'm taking that privilege, if you permit. Yeah. So ultimately, how would you want to create clarity around that goal, sir? ये तो generic हो गया. Of course, it is a goal, but how do I create clarity for it? Clarity for it, I can basically make some labels and time frame. कि इस लेवल पे मैं इतना छोड़ूंगा, इतना छोड़ूंगा, इतना छोड़ूंगा, से एक दिन में नहीं छूट सकती है. ठीक है नहीं. So the level of reduction of dependency on the nicotine, I will define that so that it will be clear for me. Absolutely. So you can actually elaborate instead of just mentioning one line or two words. I can elaborate, in next 6 months. I can elaborate in terms of time. Yes, sir. I can And elaborate quantity. in terms of quantity. Yes. And I can elaborate the time frame, the final time frame. Absolutely, sir. So that gives a better clarity. Thank you for sharing that insight, Ashwani sir, and the permission for me to enjoy that privilege of mentioning your goal over here. So हमने जो गोल सोचा है, इसका आप ये मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको वर्कआउट, अपनी जो वर्कबुक है, हैंड आउट है, उसमें जरूर कंप्लीट करें. आई जस्ट वांट टू टेक अप द नेक्स्ट स्टेप फॉर द बेनिफिट ऑफ द टाइम. सो क्लैरिटी आप अपनी हैंडबुक में कर रहे हैं, एज वी डिस्कस विद अश्विनी सर. द नेक्स्ट स्टेप इज सेल्फ बिलीव. और ये तो आप सभी की कहानियों में बहुत ही प्रेरणादायक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल कई दफा ऐसा होता है जब हम लोग रुक जाते हैं. देयर आर सर्टेन हर्डल्स. Okay, and as per research, I've mentioned a couple of hurdles over here. How can we overcome this thought process, sir? Ashwani sir, I can see on the screen on top. क्या लगता है? Is this the first time I'm trying to quit smoking? I failed miserably very time. Yeah. So what exactly can be our thought process at this moment, sir? Say failed, there are many circumstances. Sometimes I had restarted, again quit and again restarted. And it's basically the situation where I just feel like, okay, that's the only solace I can have. The extreme loneliness, the work pressure, or sometimes just for the fun, okay, let's have one today. So I hadn't smoked for 7 days, and one fine day it comes over here, comes on the table. Chal aaj pee lete yaar. And once it started again, it start again and again. So that means the self-belief, probably we can think about, we can learn from what happened. जब हमने पहली बार ट्राई किया छोड़ना, जब दूसरी बार या मल्टीपल टाइम्स में, what could be my learning? Let's breed a clarity around it, sir. तभी ये step by step चल रहा है. Okay, and the moment that we have it coming for us, this time we can have a thought process, a belief system that I am better equipped to fulfill this system. The self-belief can be there. Okay, so लेकिन steps complete होने important है, sir. It can't be just a thought. कि सिर्फ self-belief पे काम करेंगे, it is impossible. Self-belief is one of the steps
for Yes. building clear goals, sir. Setting that goal for us. Okay. So now direction की बात हुई थी. I was getting into a discussion with my team, and I identified there's some Chaudhary trophy that the team looks after. Yes, there is a all BSF competition in which the best battalion is selected per year, and that battalion is awarded with the Chaudhary Trophy every year. Exactly, sir. And I'm sure I'm also known that there is a very hectic routine. इतनी तैयारी का time नहीं होता. And how do we go about it, sir? आप अपनी टीम के लिए how would you want to focus? Do you plan कि चलो तैयारी करते रहो, no plan, and just action it? It's a very hectic process. It's a year-long process. You have to cross different stages. The sector stage, and then frontier stage, and then command stage, and then finally the final whole BSF stage. I just know that because my battalion is last year Chaudhary Trophy winner unit. Excellent, sir. All of the resources. That means the discussions were right. It's very intense. Now I want to understand बाकी सबसे भी what exactly does it take? What are the first few steps? किस direction में काम करना चाहेंगे? If we want to keep, say for example, Chaudhary Trophy in our mind, or the goal that we have thought about. Is great detail. Say, Direction. You like me to explain that? If anybody, sir, Ashwani sir, why not? If you want to. Okay. The very first thing, if you want to win the Chaudhary Trophy, you just have to understand the evaluation system of the battalion. Yeah, so that means it requires planning, sir? Yeah. Planning according to the evaluation system. The first you have to identify how the board is going to evaluate you, on which terms, what they will look at, what is the procedure of evaluating yourself. And then planning comes. Okay, in this particular field, the board will be checking out all these things. So you have to prepare to get the maximum number in that particular field. And there are many fields in which they evaluate you. So you just have to prepare different fields. You just have to make plan for that, prepare yourself for that, and then go for it. And there are plenty of things. How you handle the board when they are going to assess you. Yeah. It's quite elaborate. If you just want to continue me, I can. नहीं sir, मैं बिल्कुल आपकी बात. Actually, the thing that I wanted to bring out from this discussion is there are two aspects. हम जब कोई गोल करते हैं, सेट करते हैं अपने दिमाग में, तो दो तरह की चीजें आती हैं. कोई प्लानिंग नहीं करना है तो करना है, बस छोड़ दो, एक्शन पे कूद पड़ो. The second thing is we plan either in great detail, वो दूसरा extreme हो गया. We end up being there somewhere in the middle, जहां एक्शन भी करना है और बहुत लंबी प्लानिंग भी नहीं करनी. It could be a shorter version of our planning, understanding, and start taking steps in that direction. The first few steps, they matter. ये मैं पूरे cohort को यहाँ इस step के लिए clarity देना चाहता हूँ. The first few steps are very important. महेंद्र सर, इनफैक्ट आप ही थे जहां आपने बोला कि सर मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था वो एक्टिविटी करने में, लेकिन जैसे ही करना शुरू किया तब मेरे को इंटरेस्ट जनरेट हुआ. Yes. Diving in becomes important for us. So great. I'm happy that we all are in sync. Setting directions. Now, support is something that I want to ask. Yes, sir, Ramesh sir. Ravi ji, I would like to say something. Yes, sir. जैसे गोल सेटिंग की बात अभी जो हम लोग कर रहे थे, तो इसमें क्या है कि दो तीन बातें जो है हम लोग के मन में पहले आती है, जैसे कि अभी चौधरी टॉपिक की बात चल रही थी और बाकी दूसरी बात भी है, इसे अपने डे टू डे लाइफ में भी होती रहती है कि जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं तो उसमें दो तीन बातें हम लोग के मन में जो आती है, जैसे फियर ऑफ सक्सेस एंड फियर ऑफ रिजेक्शन, या इसमें एक और चीज आती है कि लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द गोल सेटिंग, कि क्या हम गोल सेट कर रहे हैं तो सही है नहीं सही. ये सब सारी चीजें अगर एक बार कर देते हैं
इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, फियर ऑफ फेल्योर का, फियर ऑफ एम्बिशन, सक्सेस, ये सब से जब हम ऊपर उठ जाते हैं और एक बार सेट कर लेते हैं गोल, तो उसमें जो है नाउ वी कम टू सेट प्रोसीजर। इसमें जैसे कि डायरेक्शन है, डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, इसका जो है एक सेट डेडलाइन होता है जिस पर हम अचीव करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, अगर उसमें दिमाग हमारा तो वी डेफिनेटली अचीव द गोल। जो इसमें मैं चाह रहा था कि इस तरह की चीजें अगर हेलो या रमेश सर, बिल्कुल रवि सर। यस आवाज आ रही है? बिल्कुल रमेश सर, आवाज क्लियर आ रही है सर, आपकी सारी बात वैलिडेटेड है, यू आर राइट। ऐसा होता है सर, रमेश सर, जस्ट टू डीब्रीफ, सौम्यदेव, आई जस्ट लिसन टू व्हाट यू हैव टू से, बट रमेश सर आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। देखिए वो फियर है, या तो मैं अपने आप ओवरकम करता हूं, या फिर अपनी स्क्रीन पे जो अभी देख रहे हैं, आई सीक सपोर्ट। वेयर डू वी सीक सपोर्ट? somebody expert, somebody my peer, somebody who's done it already. I figure it out. Okay, so it is not just one man army that we become. We also, for our goal setting, it becomes important. Goal को successful बनाने के लिए sir, our support is equally important. और वो चाहे वो अपने within हमारे जो fears हैं उनको overcome करने के लिए हो, या हमारे around resources हैं उनको पाने के लिए या उनको इस्तेमाल करने के लिए हो, we need that part also. And of course जब ये सब चीजें एक साथ मिलती हैं तभी तो गोल सक्सेसफुल होगा सर। अदरवाइज मैक्सिमम गोल्स बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए। आई एम श्योर एवरीबॉडी विल एग्री ऑन दिस। तो मैं जो इस सेशन पे फोकस लाना चाह रहा हूँ वो इसीलिए है दैट हाउ एग्जैक्टली डू वी ब्रिंग दैट फोकस so that our goal, the chances of our goal becomes much more higher to be successful. Okay, yes Soumya, over to you. Yes Ravi sir. And I think Ramesh sir, hello? please go ahead. Yes please sir, go ahead, please go ahead. What I feel in a balanced way, जिसमें जो है हमारी जो है कई चीज सपोर्ट करती है, इसमें जो है इवन फाइनेंशियल भी कहीं कहीं इन्वॉल्व होता है, फैमिली लाइन भी हमारी होती है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं न कहीं आती है। ये सब कुछ देख करके ही हम अगर बोल सकते हैं तो दैट विल, इसको हमें समझना चाहिए कि वेदर इट इज विदिन द स्पेसिफिक कैपेसिटी है, ये जो है सब तो इसमें करके करते हैं तो विल डेफिनेटली उसको जो अचीव करेंगे। एब्सोल्युटली फैमिली लाइन इन द सेंस कि एवरीबॉडी लव्ड वन, और ये जो हेलो यस सर आई लॉस्ट योर वॉइस नाउ। हाँ मैं इसमें ये बोल रहा था कि जो हम लोग की फैमिली है वो यू नो वेरी वेल कि जो है कहीं कहीं हमारी एक काफी चीजें हैं उसमें जो है इन्वॉल्व होती हैं और उनका सपोर्ट भी चाहिए, हमें फाइनेंशियल भी अपना चाहिए और इवन जो है फिजिकल तो है ही, एब्सोल्युटली नो डाउट, पर्सनल, तो इसमें मेंटल रोनेस भी चाहिए, माइंड चाहिए, हर चीज को ध्यान में रखते एज ए कमांडेंट, एज ए कमांडर हमें उस जो गोल किए हैं उसमें जो मैंने पहले बताया उसमें जो है I think we have lost Ramesh sir. I'd ask him to to continue this chain of thought again. Ravi sir, I'm really sorry to interject. We are short of time as yes, we overshot it. Yes, thank you so much for this wonderful session, Ravi sir. It was fantastic, filled with deliberations and debates, and that is why it overshot. And we love it. I feel bad that I'm interjecting, but thank you so much for all this right, session. Soumyadev, I'll hand it over to you, but let me thank all the participants
my cohort members to be highly participative in the entire. Good, Mr. Ravi. Thank you. Thank you very much, sir. Jai Hind, sir. Over to you, Samidev. Okay. Then if we can stop sharing the screen. Yeah. Okay. Thank you so much, sirs, first of all, for being this patient. And, it was a wonderful day today. Again, we have shared a lot in terms of, our perspectives, and you were so patient throughout. Love the enthusiasm so far, sirs. Kal hamara session hai, actually on a very interesting, talent, 7 talents, where that is being the best of you. उस पे हमारा 2 sessions होंगे. First, we'll start off with the guest session, personality and leadership, and the entire day we'll have a session on understanding self. So it is a very, very, reflective session. आज आप लोग जब बात कर रहे थे, आप लोग के different perspectives थे. We realize that we have different perspective thoughts because we are as individuals very, very different. Even though we work together, we have a common goal, we have different same jobs and same roles and responsibilities. We are bound with cognitive biases also because we have very different personalities. We are very different people. Kal ka jo session hai is a very interesting session on that. The entire day we will spend on, self-reflections on psychometrics. आपके participant handbooks बहुत important है कल के लिए, sirs. So please do keep that in hand. Please have a printout because you'll be needing it. And that is all. I would like to thank you. We are sending the feedback form. Please do fill the feedback form. आपका WhatsApp में भी होगा और अभी chat में भी है. Just 2 minute आपका time का. Please fill the feedback form, and we will see you tomorrow again at 9:15 with Neha ma'am's meditation session. Thank you so much. Jai Hind, sirs. We'll keep the link open for 10 minutes, of course. 2 more. 2 more minutes then. Okay, 2 more minutes. Please fill the feedback, and we are going off camera. Thank you. See you, sirs.